Good morning, students, and welcome to Grow Big School online classes. I hope you are well. As for me, I am okay. Alhamdulillah. Today is our second class. Okay. And in my previous class, I have taught you, we have started the new chapter, Our Body. Okay. And in that, we have learned about skeletal system. Okay, children. So before beginning, let me give you a recall. Let's have a recall. We discussed about the human body. Okay. Uh, the human body, as you all know, is composed of millions of cells. Okay. And from the cells, millions of cells. Okay. When these cells are grouped together, they form a tissue. And when the tissue is grouped together, they form an organ. Okay. And a group of organs that work together and carry out a function is called an organ system. Okay. And in our body, we are having few organ systems. I have explained you that in my previous class, and I have explained you about two important systems. Okay. The one was skeletal system. Okay. The skeletal system comprises of the skull, the backbone or the vertebral column, the rib cage and the limbs. We have learned one by one about these portions of the skeletal systems. The places where two or more bones meet are called joints. And if you remember, I have taught you that there are four types of movable joints: the hinge joint, the ball and the socket joint, the pivot joint, and the gliding joint. Okay. Children, there is Bingo's teaser in your book, page number 34, if you remember. It is a question. It says, what do we call the animals with vertebral column? Answer is vertebrates. Okay, what will happen if we don't have a backbone? We will discuss this in our okay, you can give me the answer now because after this I will be moving on to the new topic. What will happen if we don't have a backbone? We won't be able, if we don't have a backbone, we won't be able to sit or stand. So this was all I have explained you in my previous class. Today I am going to begin with a, new topic, okay, new system, and that is the circulatory system. Okay, the circulatory system is responsible for transportation of substances to and from various parts of the body. Okay, here in your slide, I have written parts. It is parts, okay? P-A-R-T-S. Okay, now let us move to the, so as I told you that circulatory system is responsible for transportation of substances to and from various parts of the body. Okay, circulatory system consists of three important parts. That is, first is very important part for this whole, to maintain this whole system, is the heart, human heart. Okay, then comes blood, and then comes the blood vessels. So let us learn a little in little more detail about these parts. Okay, let us move to the first part of our body, very important part, and that is heart. Okay, your heart is the size of your fist. आपकी फिस्ट होती है ना, ये मुट्ठी, आपका जो हाथ है बस इसी शेप, इसी साइज का होता है. ओके, इतनी इतना सा ही होता है आपका हाथ.
and it is a cone-shaped muscle located between the lungs and the sternum. आपके lungs और जो main वो है sternum है, इसके बीच में आपका हार्ट लोकेट है. लोकेशन जो है हार्ट की, it is like a pump. हमारा जो हार्ट है वो पंप की तरह है. क्यों? Because it pumps the blood to all the parts of our body. And a healthy person heart beats 72 times a minute. Very important information. You all should know this. Okay, let us move to the next. Okay, now the heart, our heart, okay, it is divided into two parts by a muscular wall. Each half is divided into upper and lower chambers. Please see the arrow where I'm taking the arrow. Look at your screen. These two are upper chambers of the heart and these two are the lower chambers. Okay. The upper two chambers are called auricles. ये जो ऊपर के दो chambers हैं, ये कहते हैं और इन्हें कहते हैं auricles. Okay. And the lower two chambers are called ventricles. I hope you understood about this. Now, let's discuss about blood. Okay, what is blood? Blood is a red colored fluid which flows inside the blood vessels. Okay. It consists of a liquid part and a number of cells of different kinds which are present in the liquid. I'm talking about blood. Okay. Now our blood has four major components. One, plasma. Okay. Then red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs and platelets. I'll be explaining you about each part now. RBCs. What are RBCs? Red blood cells are RBCs. Okay. What is the function of these cells? Red blood cells carry oxygen from lungs to different parts of the body. Okay. Red blood cells. Can you see the picture here? These are the red blood cells. They carry oxygen to our different parts of the body. The next is white blood cells. White blood cells help to fight infections. अगर हमारे बॉडी में कुछ हम बीमार होते हैं या कोई बीमार होते हैं तो उससे लड़ने के लिए, उससे बीमारियों से, डिजीज से, इन्फेक्शन से ये वाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं, फाइट करते हैं टू मेक अस स्ट्रॉन्ग. ओके. Platelets. There are blood cells which help in clotting of blood. These cells are called platelets. Clotting of blood. What do you mean by this? देखिए, जब आपको कभी कट लगता है, कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो फौरन क्या होता है, स्किन अगर कट जाती है तो ब्लड निकलने लगता है. ठीक है. अब उसके लिए क्या करते हैं आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट एड लेंगे. ओके. बट जब हाथ कटता है या स्किन कटती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वो जो ब्लीडिंग है आपकी बॉडी में कितनी देर में रुकती है? वो क्लॉटिंग होती है. कब तक? वो कैसे क्लॉटिंग होती है? किसकी हेल्प से? कैन यू सी द पिक्चर हियर? सी, ये जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स हम इन्हें कहते हैं. ये आपकी ब्लीडिंग जो हो रही होती है उसको क्लॉट करते हैं, उसको रोकते हैं. ओके. these platelets help in the clotting of blood. मतलब ब्लड की क्लॉटिंग करने में, रुकने में हेल्प करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके. So now about blood vessels. Okay. So now let's learn about the blood vessels. Blood flows throughout the body through a network of
fine tubes called blood vessels. Can you see? ये एक सिंपल सा पिक्चर है जो सिर्फ आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स दिखा रहा है. ओके, ब्लड जो है हमारा वो एक बहुत बारीक, बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं बॉडी में, जिसके थ्रू वो फ्लो करता है. ओके, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड वेसल्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स. यहाँ हमने आपको कलर्ड करके दिखाया है. ये रेड कलर की जो है ये आर्टरीज है, इन्हें हम आर्टरीज कहते हैं. और ये जो ब्लू कलर की है इन्हें हम कहते हैं वेन्स. जो ब्लड वेसल्स रेड है वो आर्टरीज है, और जो ब्लू है वो वेन्स हैं. ये जो ब्लू दिख रही हैं ये एक्चुअली ब्लू नहीं होती, ये भी रेड ही होती हैं, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई, ओके, जस्ट टू मेक इट क्लियर, we like they have been so designed, colored. Blood vessels are of 2 types, arteries and veins. Arteries, now let's learn exactly how they are and what do they do. Arteries are big and thick. Can you see here in the picture? Okay, arteries are big and thick. What do? They carry oxygen rich blood to every part of the body from the heart. हमारे हार्ट से जो आर्टरीज होती हैं वो बड़ी और मोटी होती हैं थोड़ी साइज में. ओके, और वो जो ऑक्सीजन वो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती हैं. दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू every part of the body from the heart. For example, aorta, axilla and common carotid. Okay, now veins. As compared to the arteries, veins are thinner, okay, than the arteries. They are blood full of carbon dioxide, okay, back to the heart. यानी कि जो हमारी जो वेन्स होती हैं वो ब्लड में उन वाली वेन्स में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि वापस हार्ट को ओके पहुंचता है. दे कैरी ब्लड फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द हार्ट. एग्जांपल इज वेना कावा. ओके, capillaries. Capillaries are the thinnest blood vessels. सबसे thin blood vessels होती हैं और they connect arteries and veins and allow oxygen and food to pass into the body. Okay. When the blood leaves an organ, capillaries join together to form larger and larger vessels. Okay, ultimately they form the veins. Okay, so I hope you are understanding. Okay, now let's learn exactly what is circulation of blood. Circulation of blood, the movement of blood through the heart and around the body is called circulation. हमारे ब्लड का मूवमेंट हमारे हार्ट से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट जो ब्लड होता है उसी को हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस, you know, as I have told you earlier in this last slide, in the previous slide, that heart plays a very important function in circulating the blood. Okay, very important role. Fine. So as I have explained you, our heart is divided into 4 chambers. Upper 2 are right auricles and left auricle. Okay, जो ऊपर के जो हमारे chambers है वो auricles हैं. ये वाला जो है right auricle है. Please look at your screen. I'm just putting my arrow there. Cursor, the cursor with cursor I'm showing you. Okay,
See, this is the right auricle, this is the left auricle. जो ऊपर वाले chambers हैं उनको auricles कहते हैं, और जो right side में है वो right auricle है, और जो left side में है वो left auricle है. Lower two are right ventricle and left ventricle. जो नीचे के दो chambers हैं वो ventricles कहलाते हैं. ओके, और ये है right ventricle और ये है left ventricle. Okay, now vena cava, that is the capillaries, you remember, brings deoxygenated blood from all the parts of the body and pour it into the right artery, means right auricle. Okay, when it contracts, when it moves, deoxygenated blood is carried, moves into right ventricle. Are you getting? राइट आर्टरी से जब डीऑक्सीजनेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड मूव होता है, तो वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, मीन्स ऊपर से यहाँ से नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले चैम्बर में. ओके, व्हेन इट, जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल. यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में आता है. ओके, एंड देन ventricle which contracts deoxygenated blood is carried to lungs through pulmonary artery. Here it gets deoxygenated through the process of respiration. Oxygenated blood is taken back to the heart via pulmonary vein and enters the left artery. ठीक है, वो left artery में जाता है. The left atrium contracts and blood moves to the left ventricle. नीचे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी पार्ट्स में पहुंच जाता है. कैन यू सी द पिक्चर डाउन? ये जो आर्टरीज हैं, ओके, जो रेड वाली हैं वो आर्टरीज हैं, और जो ब्लू वाली हैं यहाँ पर वो वेन्स हैं. ब्लू वाली वेन्स हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. Heart sounds. The relaxation and contraction of the heart is known as a heartbeat. Heart का लब डब एक साउंड आता है, लब डब. कभी आप सुनेंगे तो आपको ये साउंड सुनाई देगा. ओके, तो जो रुकना और कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, मतलब मूवमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन मींस, और हार्ट का रुकता नहीं है, बट वो जो उसकी पंपिंग होती है, ओके, is known as heartbeat. So the heartbeat of an adult being, human being at rest is between 65 to 75% per minute. We can listen to our heartbeats clearly with the help of an instrument called stethoscope. This image which I have shown you here, okay, ये एक stethoscope है. ठीक है, इसी के थ्रू आप अपनी heartbeat सुन सकते हैं. The doctors mostly have this. Okay, so this was about the heart sounds. Okay, and this is all. In the second part, I'll be posting you the question answers and the words. Okay, so till our next class, see you. Thank you so much. If you have any query, you can ask me on my number, personal number. Thank you.